You know what? News9 and TV9, our sister organization, we've put our boots on the ground. You know, people getting us exclusive coverage from the United States. We've got Nishant and Rohit both. Nishant with us from the White House, it seems, and Rohit getting us an update from Washington. Let's play out those elements that they sent us from the United States. Let's take a look at what's really happening on the ground. What are the people's opinion like? What's the vibe of United States right now? जब भी यूएस स्टेट विजिट होती है इस तरह की चीजें सिर्फ अपने क्लोज एलाइज के लिए की जाती है। अगर आप स्टेट विजिट उठा के देखें तो यूजुअली जो फर्स्ट लेडी है वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो किसी को भी और हर किसी को ये सम्मान दे, ये न्योता दे कि उन्हें एक प्राइवेट डिनर पे बुलाया जाए। अमेरिका के बहुत क्लोजेस्ट एलाइज को ये सम्मान दिया जाता है और मुझे लगता है कि आज जो नरेंद्र मोदी जी के लिए ये जिल बाइडेन कर रही है ये उसी का एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, भारत के लिए एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है। और मैं थोड़ी सी चीज आपको इसमें और बताना चाहूंगा। देखिए, मेरे पास फर्स्ट डिटेल्स आई कि आज वहां पे खाने में क्या क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री के लिए जिल बाइडेन ने जो तैयारी की है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उसमें वो है पटेल, एक पटेल रेड ब्लेंड वाइन। तो देखिए, जिल बाइडेन ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहां से है, कौन से स्टेट से हैं, और ये यूजुअली ये एक, मैं बार बार कह रहा हूं, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होता है। और साथ ही साथ क्योंकि यहां पे हर किसी को पता है प्रधानमंत्री मोदी कौन सी पार्टी के हैं, तो एक उसमें सैफरन इन्फ्यूज्ड रिसोटो भी रखा गया है। तो जो है इसमें एक कहीं ना कहीं एक टच देने की कोशिश की है, इसको पर्सनलाइज करने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी जी के लिए। और अभी से कुछ 40 मिनट के अंदर अंदर जो है प्रधानमंत्री मोदी वहां व्हाइट हाउस में होंगे और 7:15 7:15 PM हमारा जो टाइम है, 7:15 PM ईस्टर्न टाइम जोन, तब जाके जो है प्रधानमंत्री का हमें ऑफिशियली वो व्हाइट हाउस में भी दिखेंगे। जिल बाइडेन, जो बाइडेन के साथ उनकी तस्वीरें हमारे सामने आने ही वाली है और वहां पे जो है एक प्राइवेट डिनर होगा। ये बहुत इंटीमेट होगा। इसमें जो है जो डिनर के जो गेस्ट है, जो बड़े स्टेट डिनर के गेस्ट है वो कल आएंगे, लेकिन ये बहुत बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट और ये दिखाने के लिए कि कितना ज्यादा उत्सुक है पूरा अमेरिका, ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए जी के लिए ये डिनर रखा है जिल बाइडेन ने। ये देखिए तस्वीरें आप मेरे सामने, व्हाइट हाउस आपको दिखाई दे रहा है और सीधे मैं कपिल को बोलूंगा जो मेरे कैमरा पर्सन है, जो सामने 3 फ्लैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें भारत और अमेरिका का जो फ्लैग है, और उसी से जरा पैन जूम इन करके सीधे लेके जाइए व्हाइट हाउस को जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। यहां पर बड़ी बात क्या है मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है कि अब चीज़ें जो हैं वो एक अलग दिशा में आगे बढ़ रही हैं, खासकर देखते हुए भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया आयाम देखने को मिल रहा है, एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। अगर मैं आज इस मोमेंट की बात करूं, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर जबरदस्त तरीके से भव्य स्वागत के बैनर्स और पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और लेकिन अभी यहां पर जो अंदर स्वागत सत्कार हो रहा है और जो उनकी यहाँ के जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, जो सीईओ से उनकी मुलाकात हुई है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मुलाकात है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कपिल जरा पीछे आइए प्लीज़, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो उनकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में सभी का ये कहना है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, एक उभरती हुई ताकत है और भारत के साथ पार्टनरशिप करना हमारे मुल्कों के लिए, हम सभी के लिए यानी कि अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। दे डोंट वांट टू मिस द बस which India is in which you can see India moving forward। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात भी है। Well, so that was, Nishant speaking to us from the White House. And, you've seen what all has happened from the time he stepped down at the St. Andrews base. It was raining straight out of a Hollywood movie. Went to meet the Indian Diaspora at the Willard Intercontinental. After that, the meeting with the business tycoons, Micron, General Electric, Applied Materials, all of that. It has been a busy couple of days for the Prime Minister, then going to the White House, being received by the Bidens, the exchange of gift, an intimate dinner that they had, evening reception. On the sidelines, you had Jill Biden, accompanying the Prime Minister at the Future Skilling event at the National Science Foundation headquarters in Alexandria. You also had the exchange of gifts. Along with that, Jill Biden giving that media preview to what the dinner is going to look like, what's actually on the menu. So much has happened, Varghese. What's your actual takeaway
from these 2 days that the Prime Minister has been in USA. I was listening to Nishikant, and what he was trying to say is India is moving forward, and the US seems that he doesn't want to miss they don't want to miss the bus. So that is the sum of all this. The fact remains that the United States doesn't want to miss the bus at all. And when it comes to India's economic growth, India is of course having a diversified aspect to it, and Europe is into recession, or there is recession coming in Europe, as most of them are expressing it. That could be slowdowns, but India is registering growth. Now that is, we are the contradiction in the world map, or rather we are swimming against the sea and the waves as it is going in another direction. So of course the question is that none of those countries want to miss the bus when India is going forward, and that is why the United States is setting aside most of its reservations and are trying to deepen ties with India, not strategically alone, economically, people-to-people contacts, education also. Prime Minister Modi was talking about exchange of teachers. Now, when he said that, it's not a statement in the air, It is a very important thing, because when it comes to the United States, there is an issue about crisis of teachers, control of students, so many factors of education that has been taking up a backseat. Right now, as I'm talking to you, there is a huge crisis going in the education boards of the United States, especially when it comes to math and science. So the exchange of teachers and the idea of trying to implement world teaching methods, probably we have something that is right that we are doing, and probably there is something right that they are also doing. So this exchange of ideas among teachers would help in what, as Prime Minister Modi was saying, it is about the youth who is going to drive the momentum between the relationships between both the countries and their respective economic growth. Absolutely. You know what? On that note, let's quickly listen in again to what the Prime Minister and Jill Biden had to say at the Future Skill event that was organized at the National Science Foundation and its headquarters in Alexandria. A lot of focus that's actually been given to the youngsters, the youth. Let's listen in to what the Prime Minister had to say, followed by what the First Lady of the United States, Dr. Jill Biden, had to say. हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ये हम सभी का दायित्व है। इस उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन, और भारत में हमने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को इंटीग्रेट किया है। हमने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स उसकी स्थापना की है, जहां बच्चों को तरह तरह के इनोवेशन करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया है। हमारा लक्ष्य इस डेकेड को टेक डेकेड या टेकेड बनाने का है। आज भारत और अमेरिका को ग्रोथ का मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक पाइपलाइन ऑफ टैलेंट उसकी भी जरूरत है। जहां एक और अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, वहीं भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ का इंजन साबित होगी। अमेरिका में कम्युनिटी कॉलेज द्वारा निभाई जा रही अहम भूमिका के लिए मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा और रिसर्च में आपसी सहयोग के लिए मैं जरूर कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। इस साझा प्रयास में जरूरी है कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडेमिया,
टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी को शामिल किया जाए। एक इंडिया यूएस टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत के विषय हम सोच सकते हैं। दुनिया भर में फैले साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स का भारत के संस्थानों के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हमने 2015 में ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क अभियान शुरू किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसके तहत अब तक यूएस से 750 फैकल्टी मेंबर्स भारत आ चुके हैं। मैं यूएस में शिक्षा और रिसर्च से जुड़े सर्विंग और रिटायर्ड लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी छुट्टियां खासतौर पर विंटर ब्रेक भारत में बिताएं। But our relationship isn't just about governments. We're celebrating the families and friendships that span the globe, those who feel the bonds of both of our countries. After years of strengthening ties, the U.S.-India partnership is deep and expansive as we jointly tackle global challenges. Mr. Prime Minister, I know that education is an issue close to your heart, as it is to mine. You work to ensure that all Indians, especially girls, which I love, have the opportunity to pursue an education and gain the skills they need for our modern workforce, and it's so important. It's exciting to be able to show you some of the innovative programs our schools and businesses are creating for students here. And I'm so glad to be joined by Ambassadors Garcetti and Sandow. Williams, Anshul, thank you for sharing your stories. Mr. Mehrotra, Dr. Williams, thank you for your insights and for your work. And finally, we're so grateful to the National Science Foundation for hosting us. There are students in this room who are discovering the inner workings of semiconductors, starting in middle and high school, or training for other cutting-edge jobs. And as established businesses are transformed by new technology, as industries that didn't exist a decade ago are created, this kind of training is more important to our future than ever. If we want our economies to be strong, we need to invest in young people who are our future. We need to ensure that they have the opportunities that they deserve. Through Joe's Investing in America agenda, we're creating millions of good jobs in growing industries like clean energy and manufacturing. And we're bringing together our entire administration, including agencies like NSF, to partner with employers, unions, schools, and local governments so we can ensure that students have what they need to pursue these careers. That's the Biden education pathway. It starts with free, high-quality, universal preschool and creates a high school experience that prepares students for their next steps. It provides 2 years of affordable community colleges and opens up avenues if you decide to go to a 4-year college. That's how we build the future of our workforce. Education is the cornerstone of the bond between India and the United States, one we hope to keep strengthening and building with this visit. Our universities are partnering together, leading research, creating apprenticeships and internships that span the ocean. And as we've seen here, students from both countries are learning and growing alongside of each other, discovering the people they want to become, and building a better world together. Working side by side, our nations can create a safer, healthier, more prosperous future for everyone. So again,
to Prime Minister Modi and the entire Indian delegation, thank you for joining us, and we wish you a memorable visit. Well, a memorable visit it certainly is going to be, even as we're looking at the dinner menu that has been prepared in honor of His Excellency, the Prime Minister of India, Narendra Modi. The people are really happy, Varghese, and we've been talking about the happiness that they've expressed in forms of dance, singing, bringing out the Indian colors, the costumes, the culture that is, it's quite open out there on the streets of Washington. Our colleague Nishant, he's been speaking to people around the White House in Washington. We saw what happened in New York. A plethora of people who had, come into New York at Times Square, just wanted to catch a glimpse of the Prime Minister. The same happened in Washington. But what's happening right outside the White House? Nishant gets us, quite the exclusive details of what people are doing outside the White House. Let's quickly listen into that. ये देखिए मेरे सामने एक सज्जन है, कपिल इधर आइए जरा, व्हाइट हाउस के ठीक सामने खड़े होकर ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं। जरा दिखाइए जरा यहाँ पर व्हाइट हाउस के ठीक सामने खड़े होके भगवत गीता पढ़ रहे हैं। क्या नाम है इनका? भाई साहब, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आप बताइए। और आप यहाँ पर भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? श्री भगवान वाच सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Completely relinquishing all dharmas, realizing your inability to adopt jnana, karma, and bhakti yogas. Surrender to me. What is the reason why you're reciting this right now in front of the White House? Will absolve you of all sins, the reactions of sins, as karma palam. Why here? What brings you here? Why are you doing it in front of the White House? क्यों कर रहे हैं आप? Because the United States is the greatest country in the world, and it is in the image of Paramapadam, the location of the Nitya Vibhuti of Sriman Narayana and Mahalakshmi. The purpose of our souls is to do Sharanagati, absolute surrender. Has it anything to do with the Prime Minister, Indian Prime Minister inside? Absolutely. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhithanam dharmasya tadatmanam srajamiham. Whenever there happens a decline in Vedic Dharma, I, Bhagavan Shri Krishna, will manifest in whichever form necessary to restore Vedic order. Okay, and what do you think about the Indian Prime Minister? Mr. Narendra Modi is doing a fantastic job. Okay. He has what it takes to take the United States to the next level. Which part are you from in India? I am from Sri Ranga. My soul belongs to Paramapadam. Okay, can you just turn around? इनके हाथ में भगवत गीता है, कपिल जरा दिखाइए यहाँ पर। और ये देखिए भगवत गीता यहाँ पर ये पढ़ रहे थे व्हाइट हाउस के ठीक सामने। मैंने देखा इनके दो मित्र यहाँ पर थे। सर अपना फ़ोन बंद करके आप ज़रा इधर आ जाइए। इनके दो मित्रों को मैंने देखा जो कि शायद व्हाइट हाउस में शायद घूमने आए थे, देखने आए थे, और मैंने इनको देखा और इनका बड़ा फेथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। आप लोग इंडिया में कहाँ से? सॉरी, मैं वृंदावन से हूँ। अरे वाह, आप कहाँ से? वृंदावन से। और आप यहाँ पर प्रधानमंत्री जी हमारे अंदर है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? नहीं, हम लोग के प्रधानमंत्री अब आए हुए हैं। इससे बढ़िया बात तो आज देखिए हमारा फ्लैग पूरा अमेरिका में गुंजा हुआ है। ये अभी तक का पहले जैसा लग रहा है मेरे को। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? प्रधानमंत्री अंदर है अभी। कहने के लिए तो मेरे पास तो कुछ बात ही नहीं है। बस मेरे को तो बहुत खुश हो रहा हूँ मेरे भाई। बस ये फ्लैग देख के मैं बस आज तो ये जिस फ्लैग का जिक्र कर रहे हैं, कपिल इधर आइए जरा। ये देखिए सामने एक फ्लैग दिखाई दे रहा है आपको। ये एक नहीं है कई सारी फ्लैग हैं, एक्सक्यूज मी। वो देखिए उस तरफ आइए कपिल, वो व्हाइट हाउस के एक एंड से लेकर ऑन द राइट, कपिल पैन करती जाइए अपने राइट में। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ फ्लैग्स ही फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये भारत और अमेरिका के फ्लैग्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं और ये ठीक सामने व्हाइट हाउस आपके सामने, ये देखिए। और इस व्हाइट हाउस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। द स्पिरिट विद विच यू सी ऑल दिस, ये जो एक स्पिरिट है, ये अपने आप में सबको अभिभूत कर रही है, सबको बता रही है दैट थिंग्स आर चेंजिंग एंड इट्स नाउ इंडियाज टाइम। ये तस्वीर देखिए आप व्हाइट हाउस की, मैं बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ इंडियंस हमारे साथ हैं, दे हैव टू रश। मैं क्विकली उनसे कुछ समय निकाल के यहाँ पर उनको अपने साथ यहाँ पर आमंत्रित कर पाया हूँ। सर, एक एपिक मोमेंट, इंडिया और अमेरिका के फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट हाउस के बाहर हम हैं। इट ऑल सेट्स अ टोन की कुछ बड़ा होने वाला है। बेशक जैसा मैं सोच रहा हूँ उसके हिसाब से वर्ल्ड की दो बिगेस्ट डेमोक्रेसीज, वन इन इकोनॉमी दैट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी
which is really the best in the world as an example of democracy, is India. और ये दो biggest nations are meeting together tomorrow. This state visit of Prime Minister Modi will emphasize many verticals. Most important is the relations between two powerful blocks of the world. India has just come up as one of the most powerful nations. थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी प्लीज. आप हिंदी में भी ओके. तो सबसे पावरफुल नेशन की तरह उभर के आया है हिंदुस्तान. और सबसे अच्छी चीज़ है कि दो नेशंस जो कभी अलग अलग थे आज एक आवाज़ में बोल रहे हैं. थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट. बट इसके पीछे काफ़ी सपोर्ट है जो हमारा यूथ है और जो वर्टिकल्स हैं जिसने हमें सारी सक्सेस दी, जो आईटी के साथ शुरू हुई थी, उसके बाद वो हेल्थ केयर में गई, फिर फार्मास्यूटिकल्स में आए. और मैं करीब 30 साल से इस मुल्क में हूँ और मैं इंडिया के उस वर्चुअल को देखा है जब हम छोटी छोटी दुकानों से सामान खरीदते थे. बहुत खूबसूरत बात नहीं है कि भारत डिफेंस टाइप की बात कर रहा है, बट आज की तारीख में भारत से ज़्यादा पीस को लेकर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर एश्योर्ड हो कि ये एक ऐसा मुल्क है जो किसी के लिए थ्रेट नहीं है. हाँ, एक्चुअली डिफेंस का मकसद ये है कि पीस को जो भी डिस्टर्ब करता है उसको अटैक करना, उसको उससे डिफेंड करना है. तो इसलिए दोनों साथ साथ. Are we not talking from the position of strength? Absolutely. We have evolved over time. बहुत प्रगति हुआ है पिछले 10-15 साल में. And we are in a totally different state now. We are now talking as equals. मैम आप अमेरिका में ही रहती हैं? हैं आप भारतीय? हाँ जी पक्का. भारत में कहाँ से आप? चेन्नई. अब मुझे एक बात बताइए आप ऑनेस्टली, भारत में तो इलेक्शंस हैं लेकिन अमेरिका में भी इलेक्शंस हैं और एक इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ा तबका है जो इस इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. क्या आपको ऐसा नहीं लगता? और उसके अलावा भी एक और बड़ी चीज, आप जो एम्प्लॉयमेंट, जो बिजनेस ये जनरेट कर सकते हैं भारत से, वो भी इलेक्शन में इंपैक्ट कर सकता है. तो ये दोनों चीजें एक तीर से दो निशान हैं. पहला, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने बिजनेस के लिए भारत की जरूरत है. दूसरा, जो इंडियन कम्युनिटी यहां पर है, जो इंडियन डायस्पोरा की ताकत है, उसको अपने पास लाना. क्या पॉलिटिकली जो बाइडेन के लिए ये जो रिश्ता है मजबूत करने का जरूरी नहीं है? बहुत ही ज़रूरी है और इसका इसीलिए ये हो रहा है. एंड इट्स सो नाइस टू बी हियर. There is recognition. We're coming from a position of strength. There's a lot of strength in the Indian community here. तो वो चाहिए इसके लिए. I mean, we planned a lot to be here, just to be part of this event, and yeah, it's great to see that. Actually, like you exactly said, there's a lot Indians have to offer to this country, and there is that awareness, and that awareness has increased because of Modi ji. Absolutely. So that's great. Before you leave, sir, one last reaction from you, sir. I can answer this question. That's exactly what I wanted to know. क्या कहेंगे आप इस पर? Just to give you a small example, we started a small diaspora हमने शुरू किया और मेरा एक छोटा सा एसोसिएशन है, ग्लोबल इंडियन ट्रेड एंड कल्चरल काउंसिल, और हम करीब 5-6 बार इंडिया हो चुके हैं. उसके बाद हमने एक डायस्पोरा ग्रुप बनाया, GLO इंडिया, और उसमें आज 15,000 US के इंडियंस उस डायस्पोरा के मेंबर हैं. यहाँ पर सर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, भारत की रैली में लाखों लोग आते हैं. यहाँ की रैली में अगर 500 भी आ जाए तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. तो यहाँ पर जो आने वाले 15,000 लोगों का ये जिक्र कर रहे हैं. सोचिए, 1500 एक ग्रुप के, एक अम्ब्रेला के नीचे. और अब आप देखेंगे कि हम 1 लाख का टारगेट अचीव करने जा रहे हैं और उसकी जल्दी ही हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, और वो या तो इंडियन एम्बेसी में होगा या काउंसलेट में होगा. So what are you trying to make what are you coming at? There's a thing known as firewall. There's a thing known as a bulletproof chest. Well, so those are pictures that you see. I mean, take a look at the quality of that picture. I'm forgetting the name of the monument that's behind the two leaders over there. Of course, this is in Washington. It's amazing to see the two leaders. You know, this particular picture is going to be viral on social media. The entire Twitter fraternity is going to be abuzz with this picture of these two leaders. You know, the Bidens welcoming Prime Minister Modi.
it is quite iconic. And you know, the man who was very emotionally and very passionately reading the Bhagavad Gita, reciting the Bhagavad Gita right outside the White House, couldn't speak, I believe, because he was so moved in his passion of reciting the Bhagavad Gita. I mean, he said that Prime Minister Narendra Modi has what it takes to take US to the next level.